There is something called as house rent allowance, popularly called as HRA. HRA, house rent allowance. Whatever amount is received is taxable. Out of that, I exempt certain amount. Now, there are three exemption criteria. First is actual amount received. Second is rent paid minus 10% of salary. And third is 50% of salary for metro cities and 40% of salary for non-metro cities. Now, for income tax, there are only 4 metro cities which are recognized under the Income Tax Act. In real life, we have Bangalore, we have Pune, we have so many different cities which can be called as the metro cities. Hyderabad is a metro city, Bangalore is a metro city, but income tax के लिए metro cities में ये latest metro cities नहीं आएंगे. ये provisions old and outdated है. उसमें 4 ही cities metro cities में आते हैं. Metro cities में 4 ही city आएगा, चेन्नई, कोलकाता, Mumbai, and Delhi. Delhi is New Delhi. These are the metro cities. All other cities will be called as non-metro. अगर metro cities होगा तो हम लोग 50% of salary लेंगे. अगर other than metro cities मतलब non-metro cities होगा तो we'll take 40% of salary in our calculation. Take an example. I don't understand anything without the example, sir. अपन को सब कुछ examples ही समझेगा. Imagine I am an employee who receives a basic salary of 10,000 per month. So an employee who receives basic salary of 10,000 per month. Fine. I also get dearness allowance, DA, 60% of salary. And I receive house rent allowance rupees 10,000 per month. And I stay in Mumbai and rent paid is rupees 25,000 per month. तो मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है. मुझे डियरनेस अलाउंस के नाम पे 60% मिलता है. 60% किसका सर? बेसिक सैलरी का मिलेगा. और मुझे एचआरए के नाम पे 10,000 रुपीज मिलता है. एंड आई स्टे इन मुंबई एंड आई पे रेंट ऑफ रुपीज 25,000 पर मंथ. फर्स्ट पॉइंट, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड. भाई और बहनों, I am receiving 10,000 per month as house rent allowance. Multiply by 12 months कितना आएगा? This is the actual amount received. ठीक है आपका actual amount received
out of this, I will exempt how much? That depends upon three calculations. First one is actual amount received, that is 1,20,000. Second amount is rent paid minus 10% of salary. How much is the rent paid, bachcha log? How much is the rent paid? 25,000 per month multiplied by 12 months, 3 lakh rupees, minus 10%, minus 10% of salary. What do you mean by salary here? What do you mean by salary here? Salary means basic plus DA plus commission, if any. In this case, how much is the basic salary per month? Multiply, add DA. How much is the DA? 60% किसका लेंगे? बेसिक सैलरी का. बेसिक सैलरी 10,000 है, उसका 60% आएगा. So how much is my monthly salary? Basic 10 plus DA 6, total comes to how much? 16,000. बट ये एक मंथ का हो गया. बच्चा आपने रेंट कितने मंथ्स का लिया? 12 मंथ्स का. तो यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी इसका लोगे, पूरे ईयर का लोगे. सेम लेवल पे कंपल्सन होना चाहिए. इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? टेक योर कैलकुलेटर्स नाउ. 16,000 is my monthly salary multiplied by 12 months comes to how much? 1,92,000 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? How much is 16,000 multiplied by 12? 1 lakh. इसका 10% निकालो. तो 3 लाख माइनस 19,200 कितना आ रहा है? 3 लाख माइनस 19,200 कितना आ रहा है? राइट है? राइट है क्या? चेक करो. पढ़ के नहीं आया मैं घर से. टोटल कैलकुलेशन है मेरा. आई मे बी रॉन्ग. फर्स्ट अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. हाउ मच इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड? 1,20,000. रेंट पेड माइनस 10% सैलरी कितना आया सर? 2,80,800. एंड थर्ड वन इज he is residing in a metro city. मुंबई में रहता है, मतलब मेट्रो सिटी में रहता है. थर्ड अमाउंट क्या लेगा मैं? 50% लूं क्या 40% लूं? 50% किसका? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन. मेरा सैलरी कितना है? सर 16,000 अभी ऊपर निकाला हमने मंथली. मल्टीप्लाई बाय कितना मंथ्स? 12 मंथ्स इंटू 50% करो. आई थिंक आएगा 96,000. चेक करो. We have calculated बच्चा लोग 3 अमाउंट्स. भाई और बहनों, हमने पहला अमाउंट निकाला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. हमने दूसरा अमाउंट निकाला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. ओके. एंड थर्ड अमाउंट इज 96,000. तीनों में से विच एवर इज लेस. बच्चा लोग, तीनों में से विच एवर इज लेस विल कम इन द आउटर कॉलम. तो 120, 280, 8 और 96. यहां से आपका 96,000 सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा. क्लियर है? बाकी जो बचेगा डेट विल बी योर टैक्सेबल पोर्शन ऑफ HRA. भाई और बहनों, हाउ मच इज द HRA रिसीव्ड बाय मी? हाउ मच इज द HRA रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय? 1,20,000. ये रहा सर. HRA रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इज 1,20,000. उसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा सर? तीनों में से विच एवर इज लेस. तीनों में से विच एवर इज लेस. तो विच इज लेस हमने आउटर कॉलम में कितना लिया? 96,000. 120 minus 96 will be, ये आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा टैक्सेबल पोर्शन. डाउट है?
इफ यू हैव वॉच द वीडियोस डाउट नहीं आएगा, बाकी सब कुछ डाउटफुल लगेगा फिर। Can't tell. Problem based on house rent allowance, and I have discussed our provision again. I'm repeating the same thing again. Duplication of work, nothing else. सेम चीज विद एग्जांपल आपके वीडियो में भी है, वहां पे कुछ और एग्जांपल होगा, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है। एनी क्वेश्चंस के लिए कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, आई विल वेट। Now put your pens down, no need to write anything. No need to write anything at all. This is a problem. Mr. Ram resides in Chennai. Chennai is a metro city. हाँ सर metro city है। 40% लेंगे, 50% लेंगे, 50. He gets 10,000 per month as basic salary. बोलिए जनाब, मिस्टर राम का बेसिक सैलरी कितना है? मिस्टर राम का बेसिक सैलरी कितना है? Can move out if you want to talk. बेसिक सैलरी कितना है? 10,000 plus 8,000 is the DA. So this comes to monthly salary is how much? 18,000. Any queries still here? How much is the annual salary then? 18,000 multiplied by 12. 18 into 12 is 216. If I'm not wrong. 2,16,000 is the annual salary. अच्छा आगे दिया है, he pays rupees 12,000 per month as HRA. Mr. Ram receives, he gets rupees 10,000 as, he receives 10,000 as basic salary, 8,000 as DA per month, and rupees 12,000 per month as HRA. Bhai or Bano, how much is the HRA received? How much is the HRA received? Sir, 12,000 per month multiplied by 12 months, 1,44,000 less. How much will be exempt बच्चा लोग? How much will be exempt? तो तीन अमाउंट है, तीनों में से विच एवर इज लेस, मोर कभी नहीं लेते, लेस में सब्सट्रैक्ट करते टाइम पे एग्जम्पशन में हमेशा विच एवर इज लेस ही लेते हैं। So पहला अमाउंट इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. What is the actual amount received? 1,44,000. Actual amount received is 1,44,000. Second, rent paid minus 10% of salary. So how much is the rent paid per month? How much is the rent paid per month? कितना rent pay करते हैं? 10,000 per month rent pay किया, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स कर दूं, ये हो गया 12 मंथ्स का रेंट लेस। लेस क्या करते हैं याद है? 10% ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए मींस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। सब बेसिक प्लस डीए साल का कितना है चेक करो, 2,16,000 हमने ऊपर किया है कैलकुलेशन। दिस कम्स टू 96,000 माइनस 21,600। सब्ट्रैक्ट करो, 96 minus 20 will be 76. कितना आ रहा है? 74,400 आ रहा है क्या? कितना है यहाँ पे? यहाँ पे अमाउंट बोलो, 98,400। क्लियर है फ्रॉम आवर साइड? तो फर्स्ट अमाउंट हो गया, सेकंड अमाउंट हो गया, थर्ड अमाउंट क्या लेते हैं याद है? तो चेन्नई मतलब मेट्रो सिटी है,
50% of salary, that is 50% of salary कितना है बाबू? 2,16,000, उसका 50% आएगा 1,08,000, राइट है? तीन अमाउंट निकाला बच्चा लोग. We calculated three amounts. First, second, and third. तीनों में से which ever is less. तीनों में से which ever is less कौन सा आएगा? आउटर कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा? 98,400 पक्का. उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? टैक्सेबल पोर्शन ऑफ HRA. सर HRA मिला 1,44,000, हमने एग्जेम्प्ट किया 98,400 and the balance portion is taxable. What is the balance portion? 45,600 है क्या? या 46,600 है? राइट है? All of you got the point? Last bench, first bench, boys, girls, all clear? पक्का? कुछ डाउट है इसमें? यही अगर नॉन मेट्रो सिटी होता तो यहाँ पे 50 या 40% होता था, बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम रहता था. Should I clear this? Should I clear this? You're not supposed to write this. मेहनत मत करो, स्मार्ट वर्क करेंगे अपन. कुछ नहीं समझा पूछो, मैं रखता हूँ उसको स्क्रीन पे. You ask me the doubts if any. Any questions? Be loud. We are just doing basic calculations. I'm not putting up the column of particulars and rupees and all that stuff. So how much is the taxable portion? Check here. They have done the working note downside. Actual HRA, rent paid minus 10% of salary and 50% of salary. Clear hai? All of you. Again, you are not supposed to write anything. Second question. Second question, bhai or behno, read the question. This will not read question number 2. Following are the particulars of Mr. Priyan, who is employed in Chennai. Chennai मतलब मेट्रो सिटी में काम करता है. सर बेसिक सैलरी 4,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ्स का हो जाएगा 48,000. चलो देखते. इधर अपने को सैलरी इनकम निकालना है, सिर्फ HRA नहीं करना है. मैं यहाँ पे करता हूँ. बेसिक सैलरी कितना दिया बच्चा लोग? 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12. That comes to 48,000. Second point is DA, 100% taxable है सर. 60% of basic salary बोला है, तो 60% of 48,000 लो, क्योंकि हमारा बेसिक सैलरी 48,000 है. 48,000 का 60% कितना आता है? 28,800. Then we have something called as CCA. What is CCA? Exactly, thank you. City Compensatory Allowance. CCA stands for City Compensatory Allowance. बच्चा लोग बोलो, ये बच्चा लोग बोलो, कितना मिला सर अपने को?
250 per month multiplied by 12 months, 100% taxable. What next? House अरे आगे अपना point favorite. HRA received. बोला बोला बोला. HRA received कितनी? 450 into 12. That comes to how much? 5,400. Less. बच्चा लोग. Less exempt. Exempt कितना होगा? सर 3 अमाउंट है. अरे बच्चा लोग 3 अमाउंट है 3. कितना है? कितना अमाउंट है? ऐसा बोलेगा तो बच्चा जाग जाता नींद से थोड़ा. ओके चलो चैन से सोना है तो जाग जाओ. अपना पहला अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. हाउ मच इज द एचआरए रिसीव्ड? 5400. सेकंड अमाउंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. बाबू मोशा रेंट कितना पे कर रहे हो? 500 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12. 6,000 रुपीज रेंट पेड माइनस 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 क्या करेंगे? 10% ऑफ सैलरी. तो सैलरी मतलब क्या? बेसिक प्लस डीए. सर राइट साइड में देखो. राइट साइड में अपन के पास बेसिक सैलरी कितना है? 48,000 और डीए कितना है? 28,800. थैंक यू फॉर सच अ डिफिकल्ट आंसर. ओके हाँ 76,800 का 10% निकालो बच्चा. तो 6,000 माइनस 76,800 का 10% आएगा और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा. बट एक लास्ट की बात बता दूं, इनकम फ्रॉम सैलरी में कभी हम लोग माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे. हम लिखेंगे यहाँ पे सीधा सैलरी में. सिर्फ ऐसा कर सकते हैं. माइनस में हम लोग कभी सिर्फ सैलरी में. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? थर्ड अमाउंट तो थर्ड अमाउंट कहाँ पे रहता है? चेन्नई में, मतलब मेट्रो सिटी है. तो 50% ऑफ क्या? सैलरी कितनी? 48 प्लस 28,800 दैट इज 76,800 का 50%. 38,400 पक्का. Tell me how much will be the exemption? How much will be the exemption? 5,400. How much will be the exemption? 5,400. पक्का. लॉक करूं आंसर? गलत जवाब. अरे बाबू नील मतलब जीरो होता है. तीनों में से विच एवर इज लेस लेते हैं. लेस. इसमें डाउट है तो छोड़ दो पढ़ाई. जीरो क्यों लिया समझा क्या? अरे नील मतलब जीरो होता है बच्चा लोग. चलो आ जाओ अपना सॉल्यूशन पे. यहां से एग्जाम्प्ट कितना करूं? सर यहां से एग्जाम्प्ट कितना करूं? नील कर दूं? नील लिखो, जीरो लिखो, एज यू विश. ओके एनीथिंग एल्स? सर एजुकेशन अलाउंस भी है. भाई एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है? याद करो एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है? सर 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड. 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड. यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? हम लोग एज्यूम करेंगे 1 चाइल्ड है. अरे बच्चा होगा तो ही मिलेगा ना एजुकेशन अलाउंस. अगर मुझे किड ही नहीं है तो मेरा एम्प्लॉय मुझे क्यों देगा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस? ठीक है चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एजुकेशन अलाउंस. कितना मिलता है सर? 150 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12. आई थिंक 1800 लेस एग्जाम्प्ट. बाबू एग्जाम्प्ट कितना होगा? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड. नोट लिख देंगे. इट इज एज्यूम दैट मिस्टर प्रियन हैज ओनली 1 चाइल्ड. कुछ नहीं बोले तो 1 चाइल्ड एज्यूम करो.
Ideally in the exam column they will specify how many child he has got. एग्जाम कॉलम में क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा कि एसएससी के कितने बच्चे हैं। यहाँ से मैं माइनस करेगा, फिलहाल 1200 माइनस करता हूँ, तो आउटर कॉलम में कितना टैक्सेबल होगा? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? सर आपने फोर्थ पॉइंट नहीं लिया, सर आपने फोर्थ पॉइंट नहीं लिया। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड प्रोफेशनल टैक्स फॉर 550 रुपीज, अभी लेंगे उसको। अगर आपने शॉर्ट वीडियोस में डिडक्शन वाला पार्ट देखा होगा, तो डिडक्शंस में देयर आर 3 डिडक्शंस व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और तीसरा होता है आपका प्रोफेशन टैक्स आल्सो कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो फिलहाल ही पेड प्रोफेशन टैक्स ₹50 हमारे इनकम में कहीं पर भी नहीं आएगा, वो डिडक्शन में आएगा। कहां पर आएगा? तो फिलहाल हमने क्या क्या लिया? सर हमने बेसिक लिया फर्स्ट पॉइंट, हमने डीए लिया सेकंड पॉइंट, हमने सीसीए लिया थर्ड पॉइंट, हमने एचआरए ले लिया फोर्थ पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट में ही है, और हमने फिफ्थ पॉइंट का एडिशनल अलाउंस भी ले लिया। अब हम इन सबका टोटल करेंगे, हमें मिलेगा ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा बताओ, कितना आ रहा बताओ? 87,800 आ रहा है क्या? अरे कैलसी पे भरोसा रखो, डू इट फास्ट। इज इट 87,800? राइट है? कितना? 85,800 पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड नाउ, sir, we are in India. In India, we want discount everywhere. Income tax also we get discount in the form of something called as deductions. भाई और बहनों, deductions क्या होता है? Concession in the overall income calculation. Income calculation जितना income ज्यादा दिखेगा उतना tax ज्यादा लगेगा। To reduce the tax, we give some deductions called as the concession in common language. 3 डिडक्शंस है सर, सेक्शन 16 1A, सेक्शन 16 2 एंड सेक्शन 16 3। सेक्शन नहीं आता है मत लिखो, मेरा काम है बताने का, मैंने बता दिया। सर फर्स्ट डिडक्शन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकेंड वन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, बट यहाँ पे वो नहीं आएगा इस समय क्योंकि इट इज अवेलेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और तीसरा आएगा आपका प्रोफेशन टैक्स ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एम्प्लॉयमेंट टैक्स। कितना है सर वो? यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट में कितना है बेटा? 550 है। कितना है? चलो पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट, what is the gross salary? 85,800. What's the gross salary? 85,800. What's the maximum deduction allowed under section 16 subsection 1A? Sir 50,000 is the maximum allowed. दोनों में से, और भाई दोनों में से क्या करने का? Which ever is less लेने का आउटर कॉलम में। कितना लोग आउटर कॉलम में बच्चा लोग? 50,000 लेगा। अच्छा सर एंटरटेनमेंट अलाउंस से क्या करने का? कुछ नहीं करने का, उसको नील लिख दो, नहीं लिखा तो भी चलेगा बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा कहीं बोला नहीं है क्वेश्चन में। थर्ड अमाउंट बच्चा लोग, थर्ड अमाउंट प्रोफेशन टैक्स कितना बड़ा है? ये रहा ये रहा ये रहा, अरे ये रहा प्रोफेशन टैक्स, ये देखो यहाँ पे 550 है, 550 पर मंथ बोला है क्या उसने? अरे भाई और बहनों आगे पर मंथ बोला है क्या? आप बोलोगे सर मैं एज्यूम कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। क्यों? मैं बताता हूँ। फिलहाल मैं माइनस कर दूं, यहाँ से मैं माइनस करेगा बच्चा लोग, सिर्फ 550 माइनस करेगा। प्रोपोर्शन टैक्स मैक्सिमम आएगा 2,500 और द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिडक्टेड अंडर
Profession tax 2000. 2005 is the maximum amount that can be deducted under profession tax. इसके लिए मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय 12 मत करना, इतना ज्यादा प्रोफेशन टैक्स कोई नहीं पे करता है। क्लियर है? क्लियर है? तो फिलहाल मैं यहाँ से ग्रॉस सैलरी में से 3 आइटम लेस कर रहा हूँ। ग्रॉस सैलरी में से 3 अमाउंट लेस कर रहा हूँ। एक सैलरी डिडक्शन, दूसरा मेरा एंटरनल अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और तीसरा मेरा प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स में रेडीमेड अमाउंट, देखो प्रोफेशन टैक्स में रेडीमेड अमाउंट देंगे, बाई चांस पर मंथ दिया तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना, नहीं तो कुछ मत करना। अभी आपने गलती से इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए मैंने रॉन्ग किया। कैसे? तो अगर आपने 550 पर मंथ दिया तो 12 मंथ्स का आएगा 6600, जबकि मैक्सिमम प्रोफेशन टैक्स दैट कैन बी डिडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच? 2000। लॉजिक ही नहीं बनता इंटू 12 करने का, लॉजिक ही नहीं बनता इंटू 12 करने का, बस एक ही माइनस करेंगे। अब ये तीनों माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा, ये तीनों माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा, that will be called as net taxable salary. I'm keeping that part for you. I'm keeping that part for you. Anything else you want to ask me? ऊपर हेडिंग देना मस्त, पिक्चर का हेडिंग आएगा अपना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम के बाद पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम बनाओ अमाउंट के लिए, इनर कॉलम आउटर कॉलम। डाउट है? एनी क्वेश्चंस? एग्जामिनेशन का पार्ट वर्किंग नोट करके डायरेक्ट अमाउंट लिखिएगा, परफेक्टली ओके। एनी क्वेरीज? Any queries? All clear? Should I stop here?